Okay. Before we start, just the standard confirmation. If the screen is visible, shared screen is visible to everyone. Yes. Is the screen visible? Okay. Okay, great. So we have been dealing with multiple random variables, multiple random variables, and we already talked about the joint CDFs. We also talked about the joint PMFs for the discrete case, and we talked about the joint PDFs for the continuous case, okay? And joint CDF for both discrete and continuous, both cases, right? We did a few examples. We also talked about the conditional PMFs, okay? And the conditional PMF is joint PMF divided by the marginal PMF, okay? And I will write an expression for that. So let's say you have discrete case and you have random variables x and y are random variables, okay? Pxy xy is the joint PMF, sorry, and this is equal to the probability that capital X random variable takes a value small x and random variable capital Y takes a value small y. So this is your joint PMF. The marginal PMF is obtained by integrating out x or y. अगर y का marginal PMF चाहिए तो x को integrate out कर देंगे, and if you need the marginal PMF of x, you need to integrate out sum out the y, okay? So if I want the PMF of x, it can be obtained by summing out y from the joint PMF. Y को sum out कर देंगे, okay? And then we have this conditional guy, which is x given y is equal to P xy divided by Py of y. So this is your conditional PMF, and this is your joint PMF, and this is the marginal PMF of y. Where do I get the marginal PMF of y? Well, I got the marginal PMF of x. Similarly, you can get the marginal PMF of y. So this was for the discrete case. Okay. For the continuous case, we similarly defined x and y are continuous random variables. Okay. In that case, the joint PDF is not defined in as elegant way as this. However, it is defined as the following, that the probability your xy belong to C, where C is a region, so xy belonging to C, if there is a function fxy xy which for every C satisfies this equation, that the probability your random variable xy belong to a region C is equal to the double integral over that region C of this function, then this function is called the joint PDF. It has to be non-negative. Both the joint PMF
the sum of the joint PMF over all x over all y is 1. Similarly, the integral of the joint PDF over all x over all y, this would also be equal to 1. Okay. And then we defined the marginal in this case. And again, the marginal is obtained by y का marginal अगर लेना है तो x को integrate out कर देंगे going from minus infinity to plus infinity f x y dx. That's how you would find the marginal PDF of y, or just simply the PDF of y. And in this case, we had defined the conditional f of x given y would be equal to, once again, the ratio of the joint PDF divided by the marginal PDF. Once again, this is joint PDF of x and y, and this guy is marginal PDF of y, and this is conditional PDF of x given y is equal to y, given y is equal to y. Okay, so we will do a couple of examples. Last time हमने कुछ examples की थी, और we will do a couple of more examples before I move on to the next topic. Okay, so first example is about the discrete case. Okay. So first example is about the discrete case. Given the joint PMF, joint PMF is given to you, and the joint PMF is Pxy 0, 0 is equal to 0.4, Pxy 0, 1 is equal to 0.2, Pxy 1, 0 is equal to 0.1, and Pxy 1, 1 is equal to 0.3. Okay, so, and they are asking us to find the conditional PMF of x given y is equal to 1, given y is equal to 1. Okay, now how many different possible values x can take? X can take two possible values, 0 and 1. How many different possible values y can take? Y can also take two possible values, 0 and 1. 0 and 1. इसके अलावा there is no other possibility. Okay. Now, if I want to answer this question, this is a PMF, which means when we say कि हमने PMF बताना है, so that means I want to tell all the possible values the random variable can take. So basically, in order to answer this question, I have to answer this. What is the possibility that x can take a value 0 given that y is 1, and what is the possible value x can take x is equal to 1? What is the probability x takes the value 1 given that y is equal to 1? So this entire thing, both of these together, this would be the PMF of x, conditional PMF of x given y is equal to 1. ये conditional PMF of x given y is equal to 1. Okay. So recall, if I ask you what is the PMF of x, you will give me what is the probability x takes the value 0 and what is the probability x takes the value 1. ये दोनों बतानी पड़ती हैं. Similarly, for the conditional PMF, you have to tell me both of these things. What is the probability x takes a value 0 and what is the probability x takes a value 1, conditioned on y is equal to 1. Conditioned on y is equal to 1. Similarly, I can find the conditional PMF of x conditioned on y is equal to 0. वो एक कोई different answer आएगा, ठीक है? But वो answer भी हमने निकालना है. Okay. So how do I find this probability x takes a value 0 given y is equal to 1? This is simply the joint PMF 0, 1 divided by the PMF of y evaluated at 1. Evaluated at 1. Okay. And then what is this guy? What is this guy? P of y 1. P of y 1 is the PMF of y evaluated at 1. This is, oops. This is summation on all x, the joint PMF x and 1.
y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो x को सम आउट कर दें, x को सम आउट कर दें. Similarly, if I want to find PMF of y at 0, तो मुझे फिर भी x को सम आउट करना पड़ेगा फॉर y की वैल्यू 0 के लिए. Okay? So this would be equal to px01 plus p11 xy xy. And these numbers are given to us. 0, 1 is 0.2 and 1, 1 is 0.3. Okay? So this is 0.5. ये आपके पास 0.5 आ गया. ये हमने साइड नोट ये हमने निकाल दिया. Okay? So this would be equal to pxy01, which is 0.2 from this table, okay, divided by 0.5, which we have just calculated, which is equal to 2 by 5. Okay? ये वाला जो है, this guy, I can calculate it in a similar way, but I know that there are only two values that x can take. So this would simply be 1 minus 2 by 5, which is equal to 3 by 5. Is equal to 3 by 5. Okay. So very simple example. Okay, how do you find the conditional PMF based on the joint PMF? Okay. Another example for the continuous case. Now we have an example for continuous case. Okay. By the way, these topics of conditional distributions are covered in the book after the sums of independent random variables. We will talk about the sums of independent random variables and independence afterwards. I thought it is better to get this topic out of the way. This is simpler, easy to understand. So now the example is you are given a joint PDF fxy xy is equal to e to the power minus x over y e to the minus y divided by y, and 0 x less than infinity, 0 y going from infinity. So this is a first quadrant. This is the first quadrant. ये जो region है आपके पास, उसमें ये इस तरह का function है x और y का. क्या height होगी इसकी, depend करता है. It's hard to draw for me here in 3 dimensions, but we had a couple of example how to express this guy fxy. ये जो इसकी value आती है यहाँ से, this is the height coming out of the paper, and this guy is always positive for every value of x, for every value of y. Okay, so fxy is given. Now we are being asked find the probability that x is greater than 1 given that y is equal to y. If you are given that y is equal to y, what is the probability that x is greater than 1? Okay, so if I can draw this picture here, यहाँ पे आपका x है and y. So this function here is non-zero in the first quadrant. ये इस वाले quadrant में आपके पास exist करता है. इस वाले quadrant में आपके पास exist करता है. Okay, infinity तक जा रहा है, infinity तक जा रहा है. And the height is this value coming out of the paper. This value coming out of the paper. Okay. Now, this guy is asking that when you fix y is equal to y, so यहाँ पे आप इसको एक जगह पे fix कर दें, एक fixed value. For this fixed value, there will be some distribution of x. There will be some distribution of x for this fixed value. हमें पता नहीं है वो क्या distribution होगी, but we can find that out. We can find that out. We can find the marginal distribution of x given y is equal to y. We can find that out. Yeah. Now, but हमसे ये पूछ रहे हैं कि what is this conditional probability? So for this, I will need to find the conditional distribution of x. Conditional distribution of x. Okay. How do I find that out? The standard way of finding that out is, as we had written before, okay,
the joint distribution, well, oops, conditional distribution of x given y is given by fxy x comma y divided by fy of y. Joint divided by marginal. So conditional is equal to joint divided by marginal. Okay. And how do I find the marginal in this case? Fy of y would be equal to x going from 0 to infinity, the joint distribution, and the joint distribution is e power minus x over y, e to the minus y divided by y dx. Okay. So answers in the chat window. What is the answer of this integral? इसको ऑब्जर्व करें और मे बी आप शॉर्टकट कोई आंसर बता सकते हैं. One possibility is to solve it. And don't forget that y is a constant here. Y is a constant here. This is only with respect to x. The integral is with respect to x. So y is a constant here. I can pull it out of the integral. So e to the minus y or y, you know, both of these terms can be pulled out of the integral. Both of these terms can be pulled out of the integral. So we'll be left with e power minus x divided by y, which would be easy to integrate. हम उससे भी आसान तरीका बताते हैं. आसान तरीका ये है कि इसको रियलाइज करें कि e to the minus y मैंने बाहर खींच लिया, and then x going from 0 to infinity, and I write 1 over y e to the minus x over y dx. Okay. Anyone recognizes this? कोई recognize करते हैं कि what is this guy in the circle? What is this guy in the circle? Recall that lambda e to the minus lambda x, ये आपके पास exponential distribution थी for x greater than 0, और उसको मैं 0 से infinity तक integrate करता था. तो what I would have gotten? I would have gotten a 1. Why? Because this is the integral over the entire density function. This is the integral over the entire density function. Okay. So this guy here, where lambda is replaced by 1 over y, which is another constant, by the way, this should really be equal to 1. So fy of y turns out to be e to the minus y. Simply e to the minus y, and y between 0 and infinity. And if anyone recognizes this, this is also an exponential distribution. This is also an exponential distribution with parameter lambda is equal to 1. So very interesting. Now I try to answer this question. Expected value of probability of x greater than 1 given y is equal to 1. For this, I need to find the conditional density function of x given y is equal to y. Okay? And that answer comes from this expression here. ये जो हमने ऊपर लिखी है expression, ठीक है? इसमें हमें fxy xy joint distribution is given to us, ये तो हमें दी हुई है, and then the marginal distribution here we have already calculated it. तो ये दोनों का रेशो लें सिर्फ, and you will end up getting e to the minus x over y e to the minus y divided by y, और इस सारे को आप डिवाइड कर दें e to the minus y से. ठीक है? So this would turn out to be 1 over y e to the minus x over y, and again 0x infinity 0y infinity. Okay. So now please realize that the x guy here, the conditional distribution of x given y is equal to small y, is this guy. This is also an exponential distribution. This is also an exponential distribution with lambda is equal to 1 over y. Okay. So if I ask you this question, ये एक side question है. If I ask you this question, what is the expected value of x given y is equal to y?
Answers in the chat window. ज़बानी इसका आंसर दें. Expected value of x given y is equal to y. Realize that this guy here, जिसकी हम expected value find करने का कह रहे हैं आपको, this guy here, जिसकी expected value find करने की का कह रहे हैं, this guy is exponential with parameter 1 over y. With parameter 1 over y. अब बताएं कि सोचें जरा कि इफ यू हैड एक्सपोनेंशियल लैम्डा, वो कैसे लगता था, लैम्डा e टू द माइनस लैम्डा x. ओके, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी? अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल लैम्डा था, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी? 1 ओवर लैम्डा. एक्सपोनेंशियल का मीन 1 over lambda था. So then what would be the expected value of x given y is equal to y? This would simply be equal to जो भी आपका 1 over lambda है, and lambda is equal to 1 over y here. So this is 1 over y, which is y. Okay, so the expected value of x given y is equal to y would be equal to y. Okay. Similarly, the expected value of x given y is equal to 3 would be equal to 3. Expected value of x given y is equal to 7 would be equal to 7. इसका मतलब है कि जो x की डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहती तो एक्सपोनेंशियल है, लेकिन वो y के साथ साथ चेंज हो रही है. जैसे जैसे मैं y को चेंज करता हूं वैसे वैसे चेंज हो रही है. एंड दैट इज विजिबल फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एज वेल. इस एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है कि जो x की डिस्ट्रीब्यूशन है कंडीशनल ऑन y changes with y. It always remains exponential, but it changes with y as y is changing. तो उसका एक्सपोनेंशियल का जो पैरामीटर है वो y कंट्रोल कर रहा है. एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर y कंट्रोल कर रहा है. So expected value of x given y is equal to y is small y. Okay. Now I am going to ask something and that will lead to chapter 7. ठीक है, लेकिन हम वहां जाएंगे नहीं अभी. वो मैं बस सवाल पूछ के यहां पे खत्म कर दूंगा. And that is expected value of x given y. What is this? Realize the difference. This is expected value of x given y. ये जो ऊपर लिखी है, this is expected value of x given y is equal to y. y is equal to y. एक y को हमने फिक्स कर दिया, एक कांस्टेंट के लिए फिक्स कर दिया, तो उस वक्त आपके पास ये स्मॉल y आ गया. Expected value of x given capital Y, not taking any specific value but just the random variable y. What would be this? Answers in the chat window. Expected value of x. No. So if capital Y takes a value small y, then expected value of x is small y. If capital Y takes a value 3, then the expected value of x, conditional expected value of x is 3. If the capital Y takes the value 7, then the expected value of x is 7. If the capital Y takes the value capital Y, then what would be the expected value of x given capital Y? This would be capital Y. And this is a very, very, very deep result. Why? Because normally हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि expected value क्या होती है? एक constant होती है. But see here the expected value, this is a conditional expected value by the way, is turning out to be a random variable itself. A random variable. The expected value is a random variable. Surprise. This is a surprise. This is not what we have been thinking about. कि expected value हमेशा constant होती है. And the reason for that is कि मैंने चूंकि ये
y को के ऊपर कंडीशन किया हुआ है, कैपिटल Y के ऊपर. इफ आई कंडीशन ऑन कैपिटल Y टेकिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू 3, तो मेरे पास आंसर 3 आता है. वैल्यू 7 तो आंसर 7 आता है. If y is a random variable, capital Y is a random variable, तो मेरे पास आंसर वही random variable आ जाता है, वही random variable आ जाता है, because the expected value of y is really dependent upon what value I, capital Y can take. So इसलिए ये आपके पास एक कांस्टेंट नहीं आया, या आपके पास एक रैंडम वेरिएबल आ गया. इफ दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, आई कैन टेक इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हिच मींस आई कैन टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x given y, because this internal guy is a random variable. If it is a random variable, it will have an expected value, it will have a variance, okay, it will have a distribution. If expected value of x given y is a random variable, if it's a random variable, it will have a distribution. जो भी random variable होगा उसकी distribution होनी चाहिए. तो random variable है तो मैं उसकी expected value भी ले सकता हूँ, उसकी variance भी ले सकता हूँ. I can talk about the variance of expected value of x given y. I can talk about that, and we will talk about that in chapter 7. This is called conditional expectation. No need to talk about it right now. Okay. I mean, let's come back to our original question. Original question, जो हम भूल गए हैं इतनी देर में. The original question was, what is the probability? What is the probability x is greater than 1 given y is equal to y? What is the probability x is greater than 1 given y is equal to y? So one easy way to find this out is to integrate that joint density function, x going from 1 to infinity, f x given y d dx or dy, dx or dy. Answers in the chat window. Answers in the chat window. Dx or dy. dx. Why? Because ये जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ये हम x की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. y को तो हमने फिक्स कर दिया एक स्मॉल वैल्यू स्मॉल y के ऊपर. इसी तरह से दिस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन is not the distribution of y, it's the distribution of x. Very important to realize that this is the distribution of x. हाँ ठीक है, it is conditioned on y taking a small value y, but this is the distribution of x. This is the conditional PDF of x, not of y. So it has to be integrated over x. It has to be integrated over x, which means that this would be 1 to infinity. 1 to infinity. What is the conditional distribution here? And the conditional distribution here is ये जो हमने यहाँ find out की थी, 1 over y e to the minus x over y dx. Okay. Who can write the answer to this immediately? Who can write the answer to this immediately? क्या आंसर होना चाहिए? रियलाइज करें, रिकॉल करें कि लैम्डा e to the minus लैम्डा x ये उसी टाइप की चीज लग रही है, that lambda is replaced by 1 over y. ठीक है. So उसका CDF क्या था? fx of a was 1 minus e to the minus ax, and complementary CDF क्या था? Complementary CDF, ठीक है. Recall, CDF is the probability x is less than or equal to a. Okay. Complementary CDF is probability x is greater than a, which is equal to 1 minus CDF. इसलिए complementary कहते हैं. And this would be equal to e to the minus ax. Knowing this,
knowing this, ये जो बॉक्स में हमने चीज डाली हुई है, I would like somebody to write the answer to this immediately. Answers in the chat window. Oops, x नहीं आएगा इसमें. Yeah. E to the power minus कुछ मिसिंग है यहाँ पे. Where did the lambda go? Okay, e to the minus lambda a and e to the minus lambda a. Sorry about that. I switched lambda to 1. So what would be the answer here? This would be lambda is 1 over y and x is greater than 1. So a is 1. So this would be e to the minus 1 over y. E to the minus 1 over y. So this would be the probability that x is greater than 1. This probability is dependent upon the value that y is taking. The value that y is taking. All right. Now I'm going to talk about independence of random variables. Independence of random variables. So two random variables x and y are independent if every event involving x and y is independent. Okay, x and y are independent if every event involving x is independent. हमें independence of events का पता है. Probability of a and b वो independent कब होते हैं? जब probability of a और probability of b अलग-अलग कर सकते हैं. ठीक है? So we already know that कि probability of a b is equal to probability of event a, probability of event b, where a and b are events. A and b are events. ये हमें पता है. और ये भी पता है कि probability of a given b क्या होना चाहिए? Would be equal to probability of a. If a and b are independent. So, but लेकिन वो event के केस में, यहाँ पे we are talking about the random variables. So if x and y are independent random variables, if every event involving x is independent of every event involving y. और ये event involving x और event involving y क्या होता है? Probability that x is greater than 3 and the probability y is less than 5. ये event involving x है, ये event involving y है. If I can write that these two events are independent, x greater than 3 and y is less than 5. Okay, if I can do that for all possible events, ये तो सिर्फ दो event है ना, ये one event involving x, another event involving y, these are the two events, and if I can write this for every possible event, then x and y will be independent. In general, probability x belonging to a, y belonging to b, and by the way, ये continuous, discrete दोनों के cases में यही definition चल रही है, दोनों के case में, can be written as probability of x belonging to a and y belonging to b. Okay, if I can write this, then x and y are independent for every a and every b. For every a and every b. Okay, so इसकी implication क्या है? इसकी implication ये है कि सबसे पहले fxy ab इसको देखते हैं, joint CDF की definition क्या थी? कि this was probability x less than equal to a and y less than equal to b.
Okay? This is an event involving X. This is an event involving B. If X and Y are independent, then this must be true that this is X less than A, probability Y less than B. Okay? So this is f of X evaluated at A, f of Y evaluated at B. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि joint CDF is equal to product of marginal CDFs, marginal or individual CDFs. अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ये ट्रू होगा, इंडिपेंडेंट होंगे तो ये ट्रू होगा. दूसरा केस कि पीएमएफ के बारे में कुछ कह सकते हैं. इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट, इफ एक्स वाई डिस्क्रीट, जब कंटिन्यूअस होंगे तो पीडीएफ के बारे में भी शायद हम कुछ कह सकते हो. इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट, देन probability, this be x, y, a, comma b is equal to the probability x takes the value a, y takes the value b. This is an event involving x, this is an event involving y, and these two events must be independent if x and y have to be independent. So that means okay, this would be equal to x is equal to a, probability y is equal to b. This is equal to pxa, py of b. Okay. So in this case, the joint PMF is equal to product of marginal PMFs. Very nice. ये जो CDF था ये तो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों के लिए था, ये हमने डिस्क्रीट वाले के लिए सिर्फ कहा है. Now, by the way, we can also show that if the joint PMF is the product of the marginal PMFs, okay, we can show that if this is true, then X and Y are independent. हम ये show भी कर सकते हैं, वो proof मैं skip करूंगा, ठीक है? But it is given in the notes. It's a 2-line proof. Please take a look at that. It's given in the class notes which have already been uploaded. Okay? So पहले तो हमने कहा है कि X और Y अगर independent हो तो this will be true. This will be true. If independent, then this is true. I'm saying that the converse is also true. If this is true, then the random variables X and Y will be independent. So ये if and only if वाली condition है. If and only if. Okay. So if the joint PMF factor out, if the joint PMF factors out such that X वाली term में एक तरफ चली जाएं और Y वाली term में दूसरी तरफ चली जाएं, so that means के the random variables are independent, and vice versa is also true. Okay. No, I will give an example before I go to the joint PDF case. Joint PDF में भी ऐसा ही होता है कि joint PDF will be the product of marginal PDFs. वो भी ऐसा ही होगा. But before I move to that, let me just quickly finish one example. एक example आती है discrete के case की. The example is कि आपके पास total n plus m trials हैं with probability of success p in each trial. And all of these trials are independent trials, are all independent trials. Okay. Let X is the number of successes in first n trials. What is the distribution of X? Very easy. आपके पास n trials हैं जिसमें number of successes X है. What is the distribution of X? Answer in the chat window. Please, answers in the chat window. What is the distribution of X? अरे किसी को नहीं पता? It's binomial. X is the number of successes in first n trials. पहले आपने n trials किए हैं. P is the probability of success in each. So X is binomial. X has to be binomial. Can't be anything else. And P with parameters n and p.
x का मीन हमें पता है np होगा, वेरिएंस भी पता है np टाइम्स 1 माइनस p होगा. अच्छा, let's also define y as number of successes in last m trials. टोटली हमारे पास n प्लस m ट्रायल्स थे, और जो आखिरी m ट्रायल्स थे उसमें y को नंबर ऑफ सक्सेसेस वहां पे कह दिया. व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y? आंसर्स इन द चैट विंडो प्लीज, विद पैरामीटर्स. आंसर्स इन द चैट विंडो. हेलो, एनीवन? Same as x, so binomial np minus 1. I don't know why it would be p minus 1. p minus 1 तो भाई नेगेटिव हो जाएगा. So this would be in the last m trials. See, all of these trials are independent. So why do I care कि पहले n trials हुए? Why do I even care कि पहले n trials हुए? I am saying that there are m trials which are independent. P is the probability of success in each trial. Y is the number of successes. Then y has to be binomial. It cannot be anything else. और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे? m, p. सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले n ट्रायल्स किए या नहीं किए. आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट. ओके, now what is the joint PMF? I am trying to answer the question whether x and y are independent, xy independent or not. Okay, तो हम ऐसे देखेंगे कि क्या the joint PMF is equal to the product of these PMFs? If yes, then they will be independent. If no, then they will not be independent. ठीक है, so x और y इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए मुझे उनका जॉइंट पीएमएफ चाहिए, मुझे उनका इंडिविजुअल पीएमएफ चाहिए. इंडिविजुअल पीएमएफ तो हमने यहाँ पे निकाल दिए. ये x का बाइनोमियल np है, तो मुझे पता है कि उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है. y का बाइनोमियल mp है, तो उसकी भी पता है मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है. व्हाट वुड बी द जॉइंट पीएमएफ? सो इंट्यूशन क्या कहती है कि आर दे इंडिपेंडेंट? आर x एंड y इंडिपेंडेंट? व्हाट डज इंट्यूशन से? इंडिपेंडेंट और नॉट? यस और नो? Yes or no? Independent or not? X and Y. इंट्यूशन कहती है कि ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने लेट्स से 150 ट्रायल्स किए. पहले 100 ट्रायल्स जो थे उसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस x थी, आखिरी 50 ट्रायल्स में नंबर ऑफ सक्सेसेस y थी. ओ भाई, किसी तरीके से x जो है वो y को इंपैक्ट नहीं करता, बिकॉज द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट. देयर इज नो वे दैट नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द फर्स्ट 100 ट्रायल impact the number of successes in the last 50 trials. ठीक है, so intuition हमें ये बताती है कि x और y they have to be independent. देख लेते हैं joint PMF, देखते हैं joint PMF क्या होगा? xy is equal to probability x is equal to x, y is equal to y. This would be equal to कि पहले n के अंदर x आई और फिर px1 minus p1 n minus x, okay. And y is m choose small y p power y 1 minus p m minus y. So see, take a look at this. ये जो PMFs हैं आपके पास, they factor out nicely. This is pxy xy. They factor out nicely, hence factor out nicely. ये x की टर्म्स हैं सिर्फ, और ये सिर्फ y की टर्म्स हैं. ठीक है, कोई मिक्स एंड मैच नहीं है. बाज दफा ऐसा होगा कि x और y मिक्स हो जाएंगे. मिसाल के तौर पे you will get p power x plus y. Well, x multiplied by y. Oops, ये तो अलग हो जाएगा, x multiplied by y. ठीक है, और x plus y उनको फैक्टर आउट ही नहीं कर सकते. x plus y को कैसे मैं x में अलग और y में अलग फैक्टर आउट करूं? नहीं कर सकेंगे. तो इन दैट केस नॉट इंडिपेंडेंट. इन दिस केस दे आर इंडिपेंडेंट बिकॉज फैक्टर आउट हो जाते हैं.
वो भी एग्जांपल आएगी आपके पास, ठीक है। नाउ another example is कि let's say there are people entering in a post office. Let's say you have a post office आ गया आपके पास और इसके अंदर लोग आते जा रहे हैं, ठक ठक ठक, ठीक है। So let's say that the people entering in a post office in a single day, people entering in post office in a single day, ठीक है। Let's say that this is Poisson lambda, Poisson with parameter lambda, lambda. Now each person वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मेल with probability p and female with probability 1 minus p. Okay. So let x is the number of males going to post office on a given day and y as the number of females going to the post office on a given day, ठीक है। So दोबारा से पोस्ट ऑफिस है जिसमें लोग जा रहे हैं और जितने लोग जा रहे हैं it's a distribution which is given by Poisson lambda, और Poisson lambda का मतलब है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है लैम्डा पावर w, ये मैं x नहीं इसलिए यूज कर रहा क्योंकि x मैंने यहां यूज कर लिया, लैम्डा पावर w e to the minus lambda over w फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही होती थी पोसॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही थी, which was an approximation to the binomial distribution. So now x is the number of males and y is the number of females entering in a given day. So obviously x plus y is Poisson. Obviously x plus y is the total number of people entering in the post office, and it is given is Poisson lambda. It's given कि total number of people जो enter हो रहे हैं वो Poisson lambda है, ठीक है। So I would like to find out if x and y are independent. Are x and y independent? एक ये सवाल करना चाहेंगे, ठीक है, और दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, उसका मुझे PMF पता चल जाए, एंड y, x का पता चल जाए तो y का ऑब्वियसली उसी तरह का ही होगा, बस p will be replaced by 1 minus p, और तो इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। There is nothing special about the male or female. एक की डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो दूसरे की हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। So let's, to answer the first question and the second question simultaneously, let's try to find the joint PMF. Okay. So let's find the joint PMF, and the joint PMF is Pxy is equal to xy की बजाय इसको ij कर देते हैं, ठीक है, a little easier to track. x is equal to I, y is equal to j. तो देखते हैं i और j की टर्म्स में कोई आंसर आए और वो फैक्टर आउट अलग-अलग हो जाए तो फिर इंडिपेंडेंट होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ इसको कंडीशन करते हैं, लेट्स कंडीशन on x plus y being equal to j, being equal to I plus j. Let's condition on x plus y being equal to I plus j. Law of total probability वो क्या था? Law of total probability ऐसे था कि you recall कि probability of E would be equal to probability E given
f1 into probability of f1 plus probability of E given f2 probability of f2 and f3, you know. So यहाँ पर आपके पास हमारे पास जो है वो x plus y is equal to I plus j है. तो दूसरा इवेंट ये हो सकता है कि x plus y is not equal to I plus j. So उस पर कंडीशन कर देते हैं. So I will use this, या इसको ऐसे कहते हैं कि f1 कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, f1 and f1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. So that it f1 and f1 complement are mutually exclusive and exhaustive. Mutually exclusive and exhaustive. This is your law of total probability, chapter 2. Law of total probability. So using this, let's try to write this pxy I comma j, which is equal to the probability x is equal to I, y is equal to j. So उसको कंडीशन करते हैं, probability x is equal to I, y is equal to j, given x plus y is equal to I plus j, multiplied by probability of x plus y is equal to I plus j, plus the probability x is equal to, ये दोबारा e की probability given f complement, y is equal to j given x plus y is not equal to I plus j, into probability x plus y is not equal to I plus j. Okay? Let me ask the following question. सबसे जो आसान चीज है वो सबसे पहले पूछ लेते हैं कि what is this probability? जो ये रेड सर्कल में की है, इसका आंसर क्या है? फटाफट से कोई बताए. What is the probability that x is equal to 3 and y is equal to 4 given that x plus y is not equal to 7? Obviously ये इवेंट कभी हो नहीं सकता. अगर x plus y I plus j के बराबर ना तो हो नहीं सकता कि x जो है वो I के बराबर आ जाए और y j के बराबर आ जाए. तो this has to be zero. This has to be zero. So ये वाली पूरी टर्म तो ये खत्म ही हो गई. ठीक है. So all we are left with p x y I j would be equal to probability x is equal to I, y is equal to j, given x plus y is equal to I plus j into probability of x plus y is equal to I plus j. आप यही फार्मूला लिख सकते थे अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी लिखते. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था. अगर इसको आप लिखते तो still you would have arrived at the same conclusion. तब भी यही आंसर निकलना था. Now let me ask you this question कि probability of x is equal to I, y is equal to j given x plus y is equal to I plus j. So what would be this? कोई guess इसके बारे में करना चाहे तो? Any guesses about this? कोई guess करना चाहते हैं? What would be this? One? No, this cannot be one. If I tell you that the sum of two numbers is 7, तो एक 3 और एक 4 हो, उसकी probability 1 तो नहीं है. 2 और 5 भी तो हो सकते हैं. 1 divided by total number of ways you can get I plus j. Well, think about it कि आपके पास यूं सोचें इसको कि आपके पास I plus j ट्रायल्स हैं. I plus j आपके पास ट्रायल्स हैं. उनमें से जब x आता है, जब x आएगा, I plus j आपके पास ये ट्रायल्स कह लें या मार्कर्स कह लें. ठीक है. ये I plus j हैं टोटल. ठीक है. उनमें से कुछ टाइम पे x आ जाएगा, कुछ टाइम पे y आएगा. There is nothing else which can happen, by the way, क्योंकि उसकी probability ये हमने देखा है कि उसकी probability 0 है. It must be true कि if x is equal to I, it must be true that y is equal to j. इसका मतलब इसमें से कुछ x आ जाएंगे,
और कुछ जो है वो y के खाते में चले जाएंगे. सो लेट्स से ये वाला x के खाते में चला गया, ये वाला x के खाते में चला गया, और ये वाला x के खाते में चला गया, और मे बी ये वाला भी x के खाते में चला गया. एंड लेट्स से इफ वी हैव अनदर वन, ये रह गया. उप्स. ठीक है. सो बाकी जो है ये y के खाते में, ये y के खाते में, this for y, this adds to y and this adds to y. ठीक है. तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है. एंड यू नो 1 over total number of ways you can get I plus j. Think about it कि अगर आपके पास ये आपके पास I plus j हैं, उनमें से कितने x आएंगे, ठीक है. So this is basically x is the probability of getting a male and y is the probability of getting a female. ठीक है. X is the number of males and y is the number of females. So what we are saying is कि जब मेल आ गया, जब एक पर्सन अंदर एंटर हुआ, और अगर वो मेल था तो ये सक्सेस है, और अगर फीमेल था तो ये फेलियर है, और वाइस वर्सा. So failure or success. So really, if you think about it, कि ये जितनी दफा ये x के अंदर ऐड हो रहा है, this is with probability p, you can get x in each of these persons which enters the post office. With probability p, you will get a success. With probability 1 minus p, you will get a failure. ठीक है. और जितनी सक्सेसेस हो गई, मेल्स आ गए, वो नंबर ऑफ x है. So the probability that x is equal to I and y is equal to j is really total I plus j. आपके पास लोग थे, वो एंटर हुए हैं, उसमें से आपके पास I males आ जाएं, and the probability that you get a male is p power I and 1 minus p minus j. I plus j minus I, which is j. Okay. So each person entering the post office is male with probability p or female with probability 1 minus p. ठीक है. सो मेल अगर है तो उसको हम सक्सेस कह देते हैं, और फीमेल है तो मेल को फेलियर कह देते हैं. शीजा डजंट लाइक के ये मेल वाले को सक्सेस कह रहे हैं. सो इट डजंट मैटर, आपने फेलियर्स काउंट करनी है या सक्सेसेस काउंट करनी है. ये वीडियो वैसे ही अगर फैमसॉक वालों को पता चल गई तो मुझे बाहर निकाल देंगे. सो प्लीज डोंट शेयर दिस वीडियो. YouTube पे तो हम डाल देंगे. Okay, now let's come back to this question. So the probability x plus y is equal to I plus j, ये कितनी है? हमें दो चीजें चाहिए थी. देखो कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तो हमें ये वाला चाहिए था, और दूसरा हमें ये चीज चाहिए थी. So we already found this guy. I am interested in finding probability x plus y is equal to I plus j. What is this probability? X plus y is equal to I plus j. See, x plus y, we already know what is this. X plus y is Poisson lambda. It is given to you. Okay, the total number of people which are entering the post office, it's a Poisson. It's a Poisson lambda. Since it's a Poisson lambda, so that means this would be lambda I plus j e to the minus lambda divided by I plus j factorial. Okay. Therefore, probability x is equal to I, y is equal to j. Okay. This would be equal to, ये जो हमारे पास है, p x y I j, joint PMF, p x y I j, which is the same as probability x is equal to I, y is equal to j, is equal to the first guy that we have found, ये वाला,
this guy multiplied by this guy. So it would be this guy here multiplied by this guy here. तो करके देखते हैं. ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन you will see कि it will turn out very nice. 1 plus ji pi 1 minus pj, और दूसरा lambda power I plus j e to the minus lambda over I plus j factorial. So this would be equal to this would be equal to e to the minus lambda. एक आपके पास है, and then you have lambda p power I and lambda 1 minus p power j. Okay? ये lambda power I plus j जो है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया lambda power I और lambda power j में. So lambda power I इस p के साथ चला गया और lambda power j इस 1 minus p के साथ चला गया. ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास you have this guy I plus j factorial divided by I factorial j factorial, और एक ये नीचे खुद भी ये पड़ा है I plus j factorial. So this guy gets crossed and this will turn out to be e to the minus lambda p power I lambda 1 minus p power j divided by I factorial divided by j factorial. तो ये हमें लग रहा है कि ये I की और j की टर्म्स जो हैं वो अलग हो गई हैं. I की और j की टर्म्स अलग हो गई हैं. इसका मतलब है कि x and y independent. I and j terms separated out. When I say separated out कि वो प्रोडक्ट में है, सम में नहीं हो चलेगा ये. लेकिन दूसरे सवाल का अब हमने जवाब देना है. So पहले सवाल का जवाब ये था कि are x and y independent. So it turns out कि they are independent because joint PMF जो है वो आपका वो separate out हो जाता है, factor out हो जाता है. What would be the distribution of x and of y? उसको निकालने के लिए let's take a look at this. ये हमें लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना ये पोसॉन लग रही है. ठीक है, बट इसको पोसॉन बनाने के लिए इसके साथ e to the minus lambda p होना चाहिए था. तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं. So e to the minus lambda p power I over I factorial, एक ये अलग करते हैं. ठीक है, now we already had this e power minus lambda here, so just to be fair, so मैंने e minus lambda p अगर ऐड किया है तो e to the lambda p भी ऐड करना पड़ेगा, e to the minus lambda 1 minus p. ठीक है, this guy and this guy multiplied together will give you e to the lambda. ठीक है, and then the remaining term is lambda p 1 minus lambda into 1 minus p power j divided by j factorial. तो ये क्या बना, ये ऐसा लगता है कि ये आपके पास आ गई x की डिस्ट्रीब्यूशन और ये आ गई आपके पास y की डिस्ट्रीब्यूशन, because we immediately recognize these two to be Poisson. Hence x is Poisson with lambda p and y is Poisson lambda 1 minus p. अच्छा, रिमेंबर करें कि रिकॉल हमने क्या बताया था, मैं समराइज कर रहा हूं इस रिजल्ट को. ठीक है, रिकॉल हमने बताया था कि x plus y, which is the total number of people entering the post office, is Poisson with parameter lambda. रिकॉल पोसॉन की एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू उसकी लैम्डा ही होती है.
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई वो लैम्डा ही होती है। ठीक है, रिकॉल करें कि ये हमने ये बता दिया था आपको। ठीक है, और मेल x with probability p and female y, number of females y with probability 1 minus p. Okay, so x turns out to be Poisson with lambda p. So expected value of x आपके पास क्या आएगी? Lambda p. ठीक है, p is smaller than 1, so this makes sense कि जो x की जो वैल्यू है वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये लैम्डा से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलरली y is Poisson lambda 1 minus p and expected value of y would be equal to lambda 1 minus p such that the sum of the expected value of x and y is still lambda, वो मेल्स और फीमेल्स के अलावा और कोई नहीं आ रहा है। All right. So I will make a comment here जिसको हम प्रूफ बाद में करेंगे। Comment है, comment is कि we can show that the conditional PMF of x given the sum x plus y is equal to a, ये अगर गिवन हो, so अगर आपको सम गिवन हो, so the conditional PMF of x will be binomial. और उसके लिए आर्ग्यूमेंट वही है कि total number of people entering, some males, some females, and chance that you will have each of those a male is x is p, and then you can prove this. हम ये आगे जाके कभी prove भी करेंगे। So I will do one more example for a continuous case, for the continuous case. So continuous case के अंदर example होगी। So this is very similar to an example that we did a long time ago. तो हमने कहा कि there is a common place, वहाँ पे there is a man which comes to that place, and a woman also comes to that place, and they are supposed to meet. Okay? And they try to reach there between 12 p.m. and 1 p.m. ये उनका time. ठीक है? If their arrival times are uniformly distributed, okay, so let's say x is the arrival time of man past noon, okay, so x is uniform 0 to 60, ठीक है, ये minutes में 60 minutes. So 12 बजे से लेके 1 बजे तक आ सकते हैं, we have 60 minutes there, and x is uniformly distributed between 0 and 60, and y is similarly the arrival time of woman past noon, noon के बाद 12 और 1 के बीच में. So y is also uniform 0 and 60. Question is, what is fx of x? Answers in the chat window. And fx of x uniform है between 0 and 60. This is x, this is fx of x. What is this guy here? कोई जवाब देने वाला है? 1 over 60 minus 0. So 1 over 60 is 1 over 60. X between 0 and 60. And similarly, fy of y is also equal to 1 over 60, y between 0 and 60. Right? So let's say we need
the probability that whoever arrives first will have to wait longer than 10 minutes. Whoever arrives first, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है ना, will have to wait longer. ये हमने मेरे ख्याल चैप्टर 2 में इस टाइप का सवाल किया था, but in a slightly different context. Longer than 10 minutes. जो पहले आ गया उसको 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. So if I can draw this picture here, the picture is this. Okay? We have a uniform distribution x and y between 0 and 60. Okay, so we have uniform distribution over this region. इसको मैं यहाँ से ड्रॉ नहीं करता, over this region. और अगर इसको 2 dimensions में शो करें तो ये इस तरह की होगी. 2 dimensions में अगर इसको शो करें, so this would be something like this. Something like this. ठीक है, ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, x ये 0 से 60 and y 0 से 60. ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है and the height of this is fxy. xy would be equal to since they arrive independently of each other. ये हमने पता नहीं कहीं बताया या नहीं, should have. They arrive independently of each other is 1 over 60 into 1 over 60, which is 1 over 60 squared. Okay, so I'm interested in finding out that whoever arrives first will have to wait longer than 10 minutes. Okay? So देखें कहाँ पे longer than 10 minutes होगा? ये तो वो टाइम है जब x is equal to y है. This red line is whenever x is equal to y. This is the time, ये मैं 10 यहाँ पे लिखता हूँ. This is the time. अगर if both of them they arrive at this point, इस point पे आ जाते हैं, तो ये उस probability में fall नहीं करता. We are talking about a probability. Which is given by this shaded region. ये जो shaded region है, ये shaded region वो है जहां पे x और y में difference जो है वो 10 से ज्यादा है. Similarly, this region here is also the region when the difference between x and y is greater than 10. Yeah? So notice कर लें, ऐसे देख लें इसको कि यहाँ पे x जो है वो 10 से बड़ा है इस जगह पे, and y is 0. Y is 0 and x is greater than 10. So obviously the difference between x and y is greater than 10. So we need the probability x minus y magnitude is greater than 10. So which means the probability x minus y is greater than 10 plus the probability y minus x is greater than 10. ये भी तो हो सकता है कि एक पहले आए और दूसरा बाद में आएगा, ये भी हो सकता है दूसरा वाला पहले, और each one of them can arrive earlier. Okay, so by symmetry क्योंकि the distribution is uniform, एक जैसी है, so by symmetry we can write this as 2 times the probability y minus x is greater than 10, or 2 times the probability x plus 10 is less than y. X plus 10 is less than y. Which is the region here? ये x plus 10 is less than y है इस region के ऊपर, ये जो मैंने अब red कर दिया. X plus 10 is less than y. Okay? See, this line is y is equal to x plus 10. So जब भी इसके ये लेफ्ट वाली साइड पे होंगे तो x will be less than, x plus 10 would be less than y. So that means this would be equal to integral x plus 10
less than y, the joint distribution of x and y dx dy. So this would be equal to 2 times integral. अब इंटीग्रेशन की हमने लिमिट्स डालनी है. देखें अब लिमिट्स जो हैं वो वी नो दैट x plus 10 is less than y, x plus 10 is less than y. ये इस रीजन के ऊपर हमने इंटीग्रेट करना है which is given by this guy here. ये अब जो ब्लैक ट्रायंगल आ गई है, ठीक है. यहां पर आप x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे और y को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे. x is integrated from 0 to y minus 10. 0 to y minus 10. So x will go from 0 to y minus 10. And y will go from not 0 to 60, but 10 to 60. Y will go from 10 to 60. And this would be 1 over 60 squared dx dy. This is the easiest integration. So y going from 10 to 60, 1 over 60 square, और x को अगर आप इंटीग्रेट करें, you will get y minus 10 dy. So this would be equal to 2 over 60 square, 2 over 60 square, and this would be y minus 10 square over 2, and integrated from 0 to 10 to 60. So this would be equal to, ये 2 is 2 के साथ cancel हो जाएगा. So this would be 1 over 60 square into 50 square. So it would be equal to 25 over 36. 25 over 36. Okay, we have a few more examples on independence, and then the sum of discrete and continuous random variables, and we will talk about that in the next class. I think I may have given a couple of problems about the sums of random variables, independent random variables. We will remove that. I will take a look at the homework. I recall, I think there are a couple of questions maybe which talk about the sums of independent random variables. We have not covered that topic yet. तो वो topic, वो सवाल जो है वो हम remove कर देंगे if there are any. I will send out an email about that. So I am going to close today's session. If there are any question, I will be happy to stay back for a few minutes if anyone has questions. सर इसमें ये जो ऊपर आपने मेल और फीमेल की जो नंबर थी तो उसको आपने ए की इक्वल लिख दिया, तो ए यहाँ पे वेरिएबल है ना? कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? मेल और फीमेल की नंबर? ये सर, ए जो लिखा है ये जो है इसकी बात है? जी सर. हाँ, तो ये तो अभी हमने खैर शो नहीं किया है, ये हमें किसी नेक्स्ट क्लास में भी शो कर देंगे कि हमने ये बताया कि x प्लस वाई अगर आपको फिक्स नंबर दिया हुआ है तो x की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल होगी. x की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल होगी. ठीक है. although के x प्लस वाई इज पोसॉन, although के x प्लस वाई इज पोसॉन, although के x इज पोसॉन, although के y इज पोसॉन. देखें पोस्ट ऑफिस में जितने लोग जा रहे हैं वो पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है. मैन को सिर्फ कंसीडर करें वो भी पोसॉन है, वुमेन को भी कंसीडर, मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी कंसीडर करें वो भी पोसॉन है, उनका सम भी पोसॉन है. लेकिन given x plus y is equal to a, if you are given the total number, given that total number, अगर मैं conditional PMF of x find out करूं तो वो मेरे पास पोसॉन नहीं आता, वो मेरे पास बाइनोमियल आ जाता है. ठीक है, ये हम शो करेंगे नेक्स्ट टाइम. क्या प्रॉब्लम? मतलब इसमें हमें पहले से पता होता है कि पोस्ट ऑफिस में इतने लोग आएंगे? जी, हमें पहले से पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में लेट्स से कि इफ आई टेल यू कि 150 लोग आएंगे पोस्ट ऑफिस में, व्हाट गिवन दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x के नंबर ऑफ मेल्स एंटरिंग द पोस्ट ऑफिस, दैट इज नो लॉन्गर अ पोसॉन, दैट विल बी ए बाइनोमियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि वैसे तो हमें पता है कि हमने अभी शो तो किया है कि x की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पोसॉन है, ठीक है, लेकिन x की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दैट द टोटल नंबर इज 150, गिवन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x वुड बी बाइनोमियल. ठीक है, ये हम शो कर देंगे. शायान, आपका क्वेश्चन है? Sir, in the last example where you were double integrating, how did you decide the limits?
how कि did I जो आपने, decide the limit? हाँ, yes, so y so you've done 10 to 60 and for x you've done 0 to y minus 10. So how did this y minus 10 come from? जी बिल्कुल बिल्कुल. So as I said earlier के इन क्वेश्चंस के अंदर जो है ना मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स में लिमिट्स को क्लियरली डिफाइन करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, जो हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी किया. सबसे पहले तो ये हम देखते हैं, एग्री करते हैं कि ये जो रीजन है, डू यू एग्री विद दिस रीजन, कि ये जो ब्लैक वाला जो रीजन यहाँ पे लगा हुआ है, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ग्रीन में कर देता हूँ. डू यू एग्री कि दिस इज द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, दिस ग्रीन रीजन इज ऑफ इंटरेस्ट? Yes. अगर उससे नहीं एग्री कर रहे या उसका भी नहीं पता चल रहा, पहले हम वो क्लियर करेंगे. नहीं सर, वो समझ आ गया. ये समझ आ गया ना, ये You're वो रीजन है. considering the upper triangle and the lower triangle, right? ये अपर एंड लोअर ट्रायंगल, ये देखेंगे 2 जो आ गया ना यहाँ पे, तो ये 2 की वजह से जो है वो अपर और लोअर दोनों आ जाएंगी. लेकिन ये 2 का मतलब है कि मैं सिर्फ ये वाली जो ट्रायंगल है ना, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 10, दिस इज ओनली अपर ट्रायंगल, दिस इज अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल. ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे वाली ट्रायंगल ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगी. ठीक है, सो हमने ये सिर्फ एक ही का एरिया फाइंड आउट किया, या 2 का आप अलग-अलग करना चाहते हैं, 2 अलग-अलग इंटीग्रल्स भी सेटअप कर सकते हैं. सो हाउ डू आई कम अप विद दीस लिमिट्स? आई वांट टू इंटीग्रेट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, दिस ग्रीन गाय, ओवर दिस रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन, और वो जो ट्रायंगुलर रीजन है वो ये रीजन है x plus y is less than 10, x plus y, x plus 10 is less than y. This is the guy, x plus 10 is less than y, ये वाला. ठीक है, सो अगर आप इसमें देखें तो let me just erase everything here. ठीक है, तो इसमें आप देखें कि कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये एक लाइन आई, फिर ये एक लाइन आई, फिर ये एक लाइन आई, इस तरह की ये लाइनें जो है ना, ये आपने इन सब को इन पे सम अप कर देना है. along one green line x is going from 0, यहां पे देखें x 0 होता है, x is going from 0 to this point, and this point is y minus 10. So x is going from 0, x is going from 0 to y minus 10. ठीक है, so x is going from, ये x is equal to 0 पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है x is equal to y minus 10 का पॉइंट है. ठीक है, नाउ दिस इज ओनली वन लाइन, ये तो एक ही लाइन है कि जिसमें x गोइंग फ्रॉम 0 टू y minus 10. मैंने ऐसी ग्रीन सारी लाइनों को यहां से लेके ऊपर तक इंटीग्रेट कर देना है, विच मींस कि y मस्ट गो फ्रॉम 10 to 60, y must go from 10 to 60. Does this make sense? Yes sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? शायन, आपका और क्वेश्चन है या इसको मजीद क्लैरिटी इसमें? नहीं सर, that's it. That cleared my question. Thank you. Right. Anyone else? किसी और का क्वेश्चन हो? नहीं? All right, so I'm going to close the session and we'll see you on Tuesday.